Friends, welcome to this video. Myself Shipra Agrawal here, and today we are going to do class 8 General Knowledge chapter number 48, That Time in History, and chapter number 49. First of all, we are starting with the chapter number 48, The Time in History. Number first, choose the correct options. जो सही option है ये options हैं that you need to choose. Number first, around 3000 BC, most of the world is in the Neolithic age. Around that time, किस टाइम पे 300 BC के आसपास कौन सा ऐसा समय था जब वर्ल्ड जो दुनिया थी वो किस में थी? न्यूथोलिक एज में थी. राइट आंसर्स आर A, B and C. All are the right answer. नेक्स्ट सेकेंड, विच ऑफ दीज हैपन ड्यूरिंग द 8th century BC. इनमें से क्या हुआ था 8th century BC में 800 BC से लेके 701 BC तक. राइट आंसर्स आर A, B and C. थर्ड, अशोका द ग्रेट ascends the throne in 269 BC. In the next 10 years in history, अशोका तो जो ग्रेट थे 269 BC में थे और नेक्स्ट 10 ईयर हिस्ट्री के लिए कौन थे? राइट आंसर्स आर A, B and D. फोर्थ, बिटवीन AD 79 एंड AD 81. AD 79 और AD 81 के बीच में क्या क्या था? राइट आंसर्स आर A and B. फिफ्थ, the Shore Temple at Mahabalipuram is built between AD 700 and 728. ड्यूरिंग दिस टाइम जो शोर टेम्पल था महाबलीपुरम में वो बना था AD 700 एंड 728 के बीच में. ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम क्या था? राइट आंसर्स आर A एंड D. सिक्स, Portuguese Vasco da Gama land at Calicut on 20 May 1498. That year, जो पोर्टुगीज थे वास्को डी गामा वो कालीकट गए थे 20 मई 1498 में. दैट ईयर, उस साल क्या था? B and D. क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर थ्रिंगाबाद एंड D. सिकंदर लोदी बिकम्स द सुल्तान ऑफ द दिल्ली. 7. In 1776, the USA declares independence from Great Britain. 1776 में USA ने डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस किसमें? ग्रेट ब्रिटेन से. दैट ईयर, उस साल. A, B and C are the right answer. 8. The revolt of 1857. That year. Right answers are A, B and C. नेक्स्ट 9, 1869 मोहनदास करमचंद गांधी बॉर्न. 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था. ऑल्सो बॉर्न, और उसी सालों किसका जन्म हुआ था? राइट आंसर्स आर B, C एंड D. 10, 1947 इंडिया विंस फ्रीडम. 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली थी. डेट ईयर, उस साल और क्या हुआ था? राइट आंसर्स आर A, B, C, D. ऑल आर द राइट आंसर. नाउ बेटा कम टू नेक्स्ट पेज. सेकेंड नंबर, कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग 2 इवेंट्स. ये टेबल कंप्लीट करनी है 2 इवेंट्स लिख के दैट हैपन इन ईच गिवन ईयर. जो साल दिए हुए हैं उनमें हुए थे. चूज इवेंट्स फ्रॉम द वंस एट द बॉटम ऑफ द पेज. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. चूज़ करने हैं इवेंट्स आपको जो लास्ट में पेज में दिए हुए हैं. एंड वन हैज़ बीन डन फॉर यू एक आपके लिए करके दिया हुआ है. नंबर फर्स्ट इज गिवन. नंबर सेकेंड 1901. राइट आंसर्स आर द फर्स्ट नोबेल प्राइजेस एंड रेडियो मैसेजेस सेंट अक्रॉस द अटलांटिक. थर्ड 1905. राइट आंसर इज B, Julius Verne dies, and G, the partition of Bengal by the British. Fourth, 1911. Right answers are J, in that India's capital shifted from, and Q, in that Ronald Amsterdam expedition reached the South Pole. Now come to fifth number, 1912. Right answers are C and K. C, the Titanic sinks, and K, the first Balkan War breaks out. Sixth number 1913. Right answers are D and H. D, Rabindranath Tagore wins the Nobel Prize in Literature, and H, in that
India's first full-length feature film, Raja Harishchandra, released? 7th number, 1945. Right answers are E and K. E. Nuclear bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki. I. In that the Nuremberg trials begins. 8. 1950. Right answers are L and M. In L, right answers is the Constitution of India comes into, and N. Dr. Rajendra Prasad becomes the President of India. Next 9 number, 1971. Right answers are M and P. M. Bangladesh is born, and P. Himachal Pradesh is formed. 10th number, 2000. In 2000, right answers are O and R. O, in that India's population crosses the 1 million mark, and R, Chhattisgarh, Uttaranchal and Jharkhand formed. I hope it is clear to you. Come to the next chapter, chapter number 49, quiz 5. Number first, true or false. Beta, you need to write which is true and which is false. A. The river Mississippi flows from the USA to Mexico. जो रिवर मिसिसिपी है वो कहाँ से होके जाती है? USA से मैक्सिको की तरफ. It's false. B. The deepest lake in the world is Lake Baikal in Russia. जो deepest lake है, सबसे गहरी जो lake है वर्ल्ड की, वो लेक बाइकाल है रशिया में. It's true. Second. Third, jackfruit is the national fruit of Bangladesh. जो jackfruit है वो national fruit है बांग्लादेश का. It's also true. D. Thailand's national flower is the orchid. जो थाईलैंड का national flower है that is orchid. Right answer, it's false. Next, E. India's oldest football club is Mohan Bagan AC. It's true. F. Courtney Walsh was the first to take 500 wickets in Test. It's also true. Next, G. The first international T20 match was played between India and Pakistan. It's false. H. The first batsman to be given out by the third umpire was Sachin Tendulkar. It's true. I. The internet and the web are two names of the same thing. It's false. J. Dennis Ritchie created the C programming language. It's also true. K. Robert Goddard is known for his work on modern rockets. It's true. Next, Werner von Braun was a brilliant engineer who was involved in the development of both German and US rockets and missiles. It's also true. Now come to next point. Fill in the last letter of the word is the first letter of the next one. जो last letter है पहले word का वही first letter है next word का. Let's start. A. The enzymes is this fruit break down the proteins in meat. Right answer is papaya. Next, a color, it's amber. C. An element discovered by Marie Curie and Pierre Curie. Right answer is radium. D. Fossa, a cat-like animal, is found only on this island. Right answer is Madagascar. E. The capital of Iceland. Right answer is Reykjavik. Next, F. The art of cutting and folding paper into decorative shapes. Right answer is kirigami. G. 4-volume work by Megasthenes. Right answer is Indica. Beta, fill your book immediately. If you find any confusion, you can send me message. Otherwise, we can talk in the live classes. Thank you for watching this video. Keep learning. Stay home. Stay safe.